now the point intermolecular forces. Okay, the name itself says, यहाँ पर क्या बोल रहा है, intermolecular forces. Intermolecular, okay, the forces which is present between the molecule, okay, between the neighboring molecules, जो कि atoms जो होंगे एक दूसरे के neighboring atoms जो होंगे उनके अंदर जो molecular force होगा, okay, intermolecular force जो होगा उसको क्या कहेंगे, intermolecular forces. अभी जो intermolecular forces है, it can be a attractive forces or it can be a repulsive forces. Okay, so what will be the definition of this? The attractive or repulsive forces which are present in between the neighboring molecules is known as intermolecular forces. So as the distance between the molecules increases, distance अगर बढ़ता चला गया एटम्स के बीच में का, तो वो क्या होगा, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इस हिसाब से ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है सबसे ज्यादा किस में देखे जाएंगे, सॉलिड्स में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डिस्टेंस कम से कम होता है. ओके, कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा सॉलिड्स में, देन लिक्विड, एंड लीस्ट विल बी इन गैसेस, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, एटम्स जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए वहां पर उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा. सो इन दिस वे द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हाईएस्ट इन द सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस. नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कौन से हैं, जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एक्सेट्रा, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ये डिपेंड करता है. ओके, इसके ऊपर से हम क्या करें, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं. जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी. So in this way the physical properties of matters are depend upon the intermolecular forces. Now this was the introduction of the intermolecular forces. अभी जो intermolecular force है इसके कुछ types हैं. Okay, इसकी total 5 types हैं. There are 5 types of intermolecular forces. The first one is dipole-dipole interactions. Okay, the second one is ion dipole interaction. The third one is dipole-induced dipole interaction. The fourth one is London dispersion forces, and the fifth one is hydrogen bonding. In this way, there are the 5 types of intermolecular forces. We will see one by one. So the first type of intermolecular forces is the dipole-dipole interaction. Okay, अगर हम इसको नाम को ही अगर देखेंगे हम, dipole-dipole interaction. Okay, dipoles. Okay, अभी अगर वर्ड को डिवाइड करें हम, di means 2 और ये poles means, okay, जिस तरह से मैग्नेट को 2 पोल्स होते हैं, कौन से, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ओके, इन दिस वे अ मॉलिक्यूल एज आल्सो हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पोल्स. अभी कौन से 2 पोल्स हैं, इट इज पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. ओके, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप्स के पोल्स तैयार होते हैं. ओके, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल. अब ये जो डाइपोल्स तैयार हो रहे हैं, ओके, व्हाई दिस डाइपोल्स अपीयर्स, क्योंकि ये जो डाइपोल तैयार होने का रीजन है, दिस ड्यू टू द electronegativity difference. Okay, we know that electronegativity is the ability to attract the shared pair of electron towards itself. Okay, ये जो electronegativity है ये हर एक एटम के लिए होती है. ओके, ये जो हर एटम की एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होती है मॉलिक्यूल के अंदर उनके, उसको अपने तरफ खींचने के लिए. ओके, सो इन द periodic table we have studied the electronegativity from top to bottom decreases and from left to right increases. Okay, अब ये जो डाइपोल्स तैयार हो रहे हैं रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर हम देखें एग्जांपल लेंगे हम, इफ आई हैव टेकन दिस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, नाउ द हाइड्रोजन इज अ अल्कली मेटल जो कि पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है. ओके, और अगर हम देखें क्लोरीन एक्सट्रीमली राइट साइड में है. ओके, अभी मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की है, और लीस्ट हाइड्रोजन की है. सो as electronegativity highest to the chlorine, so it has the ability to attract the shared pair of electron towards itself. उसके पास वो ताकत है कि वो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई है इसको अपने तरफ खींच के लेने की. ओके, सो इन दिस वे देयर इज अ, अभी 2 पोल्स तैयार होंगे. कौन से, अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाला है. ओके, नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, इट इज अ पार्शियली लॉस. तो ओके, तो ये जो पार्शियली लॉस है इस तरह इसको हम कैसे दिखाएंगे, इट इज शोन बाय डेल्टा पॉजिटिव. ओके, इन डाइपोल्स अगर किसी एटम मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोल्स तैयार हो रहे हैं तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव एंड हियर डेल्टा नेगेटिव. इन दिस वे द डाइपोल्स आर शोन, इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम, हेंस क्लोरीन विल गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होती है. ओके, इट इज अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. सो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोल्स विच इज डाइपोल्स. अब ये जो एटम है HCl एक मॉलिक्यूल हो गया,
इसके अंदर डायपोल्स है, और ऐसा दूसरा अगर और एक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर भी ऐसे डायपोल्स होंगे। ये जो डायपोल डायपोल यानी कि दो मॉलिक्यूल के अंदर जो डायपोल्स तैयार हो रहे हैं उनके अंदर का जो इंटरेक्शन है इसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, अभी जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये एक प्रॉपर्टी को जनरेट करता है, वो जो है डायपोल मोमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट, इसको हम शो करते हैं म्यू से। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस डायपोल मोमेंट। अब ये जो मॉलिक्यूल के अंदर तो दो पोल्स तैयार हो रहे हैं, ओके, डायपोल्स तैयार हो रहे हैं, इनका जो मोमेंट है वो कैसे निकालेंगे डायपोल मोमेंट। सो इट इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, उसके ऊपर जो चार्ज है वो, और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो उनका डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के अंदर का, ठीक है, ये डिस्टेंस और उसके ऊपर जो चार्ज है, जो भी चार्ज आप यहाँ पे देखेंगे हम तो +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, यानी कि 1 चार्ज इसके ऊपर 1 है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज शोन बाय म्यू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, क्यू तो आया गया चार्ज प्रोडक्ट है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि r। सो इन दिस वे द डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड। ओके, और इसका जो यूनिट है वो है dB, which is shown by capital D. So in this way the dipoles is created the property just like dipole moment. Okay, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, the atoms having higher dipole moment, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, और जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सो आई विल समराइज इज dipole moment increases, it is directly proportional. Okay, dipole moment increases, the intermolecular forces increases, and if intermolecular forces increases, the physical property like melting point or boiling point etc also increases. So in this way this is the dipole dipole interaction. Then the second one is ion dipole interaction. Okay, now the name itself says it is an interaction between an ion and one dipole molecule. Okay, so it can be defined as the ion dipole interaction arises due to the electrostatic attraction or electrostatic force between an ion. अब ये जो ion है ये कौन से हो सकते हैं, it can be a cation or it can be a anion. So the interaction between an ion and a dipole molecules, यानी कि ऐसा molecule जिसके अंदर क्या है, दो poles है, कौन से, one positive pole and second one is negative pole. So interaction between an ion and a dipole molecule is known as ion dipole interaction. The second point is this ion dipole interaction depends upon charge. Okay, then the size of an ion, okay, जो भी आयन होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन उसके साइज के ऊपर डिपेंड होगा। Then it is also depend upon the size of molecule जिसके अंदर डायपोल्स तैयार होने वाले हैं वो, and it is also depend upon the dipole moment. So in this way the ion dipole interaction, okay, has a dependent property just like charge, size of an ion, size of molecule and the dipole moment. Okay, we will study this by taking an example. Okay, now the example is if you dissolve the NaCl, okay, sodium chloride, in the water. Okay, so this NaCl is a salt, it will give ion Na plus Cl minus. In this way the ions will be dissociated. Okay, then this sodium having plus charge is a cation. Okay, so here this cation will, just like of this cation, I will surround this cation is surrounded by the water molecules. Okay, water, we know that H2O. In this way the structure of water molecule is just like this, and the water molecule is having a dipole moment. This water molecule has a dipoles, यानी कि it is having a two poles, which is having this hydrogen partially positive charge, this hydrogen having partially positive charge, and this oxygen having partially negative charge. Okay, there will be -2 charge of this both hydrogen. Okay, so in this way this is the dipoles created in the water molecules. Now the sodium having plus charge and the oxygen having minus charge. So this sodium ion is surrounded by the water molecule by producing dipoles. In this way there will be interaction of this oxygen
having plus charge having this minus charge. In this way, from all the sides, the sodium cation is surrounded by the water molecule which is having partially negative charge. Okay, so this is the example of ion dipole interaction. In this way, the ion dipole interaction takes place having one cation surrounded by the dipole moment of water molecule having oxygen as a partial negative charge. Now there will be a question. Okay, you will ask me a question, why this cation is surrounded by this? Okay, we know that there are two ions, Na plus and Cl minus n. Okay, so the reason is why this sodium is surrounded by this molecule, because we know that the cation is having a smaller size than the is respect to anion. Okay, हमें पता है अगर कोई atom होगा just like this sodium I suppose, okay, it is having less size if Na plus cation is there. Okay, it is a loss of electron, so the size of यानी कि atomic radius जो है वो decrease हो जाती है. So cation is having less atomic radius than its respect to atom. So the sodium having less atomic size, so this sodium is surrounded by this negative ions of oxygen molecules. And the second reason it will be, and the charge density on the cation is higher than the anion, so this makes the possibility or the interaction between the positive ion and the negative part of the polar molecule more stronger due to having the charge density higher than the chlorine. So there is an interaction between the cation and the polar molecules. So in this way, this is the example of ion dipole interaction. And if the charge of the cation is more, the interaction will be more stronger. Suppose this is the example of NaCl. Okay, so sodium having just one charge. If there is example of MgCl2, so there will be Mg plus 2. Okay, more the charge on the atom, जितना ज़्यादा charge होगा उतना ज़्यादा interaction क्या होगा और stronger होगा. So the magnesium will have the higher ion dipole interaction than the sodium. Okay, if I have taken example of AlCl3, then it will be Al plus 3. So the aluminum will have, it is having a higher charge separation, yani it is having a more charge plus 3 charge. So aluminum will form more stronger ion dipole interaction with the water molecule than the magnesium, than the sodium. Okay, so higher the charge, then higher will be the, or the stronger will be the ion dipole interaction. So in this way, we have completed these two types of interaction. The first one, dipole-dipole interaction, and the second one, ion dipole interaction. The further types of interaction we will see in the next video. Okay, so prepare the notes of these two types of interactions. Finally, you guys are amazing. Keep watching, keep learning.